Hello friends, welcome to my today's class. Pollination in salvia we did in the last lecture. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਵੀਆ ਫਲਾਰ ਹੈ that is bi-lipped flower ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ pollination ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ we have already done in the previous class. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ go through ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ. Now come to our next point, that is pollination in orchids. Orchid plants ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ pollination ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Orchid plant ਜਿਹਦਾ full name ਹੈ Ophrys speculum. This is its full name. ਔਰ ਜਿਹੜਾ insect ਇਹਨੂੰ help ਕਰਦਾ pollination ਦੇ ਲਈ, obvious ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ pollination ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, cross pollination which is done by the insects. Insect ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ friend insect ਹੈ that is Colpa aura. This is a hairy wasp. hair ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ body ਤੇ abundant. अच्छा ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ plant ਦੀ. This plant it looks like a female wasp. This is the male wasp जो help करेगा pollination, but this flower it looks like this orchid, this flower it looks like female wasp. And the main thing is why this looks like the female wasp, just to attract the male wasp. It looks like female wasp to attract the male wasp. Male wasp ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ this is the female wasp. ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ it is a flower and it come towards the flower that is actually the orchid plant flower. ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ pollination 'ਚ help ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. just simple as ਇਹ ਜਿਹੜਾ topic ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. next one is pollination in fidge. pollination in fidge ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ fast ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. Its full name is Ficus carica. Its scientific name actually is Ficus carica. Sometimes ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ what is the scientific name, or either ਤੁਹਾਨੂੰ scientific name ਹੀ provided ਹੋਏ during the exam. That's why scientific name ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ side by side learn ਕਰਨੇ ਆ. And it depends upon Blastophaga wasp. It also, here pollination is also done by, this is also done by a wasp name Blastophaga. ये wasp actually approach क्यों करता है इस plant ਨੂੰ, just to get food. ਇਹਦਾ ਇੱਕ purpose है कि इस plant तक इन्हें क्यों आना है, just to get food. Here hypanthodium term आई कहदे विच आई, मैं दस दी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. hypanthodium inflorescence ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. inflorescence, hypanthodium inflorescence means here is male flower at the top, then there is a gall flower, and at the base there lies the female flower. female flower ਜਿਹੜਾ ਉਹ lie ਕਰਦਾ ਹੈ base ਤੇ. female flower it produces, it lays eggs जो feed ਕਰਨ. here
इट ले एग्स, फीमेल फ्लावर ने एग ले करने हैं। These eggs goes upward towards the gall flower where it get nourished. इत्थों नरिशमेंट मिलेगी, गाल फ्लावर तो नरिशमेंट। And after that it move towards male flower just for pollination to get pollen grains. Since pollen grains ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ here to get pollen grains. Next is clear है जी। मेन चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ pollination of figs अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ याद रखना है, the main thing is its scientific name, that is Ficus carica, and the wasp which is helping, that is Blastophaga. Blastophaga approaches this flower to get food. Here hypanthodium inflorescence occurs, that means here are three kinds of flowers: male flower at the top, gall flower in the center, and the female flower at the base. At the base female flower lay eggs, then these eggs get nourished from gall flower and then approaches towards the male flower to get pollen grains from there, and after that when pollination happens, and after that fertilization is done. We will come to the fertilization point a little bit later. Now come to the next flower which is in your syllabus, that is pollination in yucca. This is also a flower. These are the small topics. Let's cover it quickly. Pollination in yucca. It's also a flower and it is pollinated by a moth. एक moth help करदी है the pollination which whose name is Pranaba. Both yucca flower and moth depends upon each other. देखो pollination ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ कि अगर दोनों ਨੂੰ फायदा हो रहा आपस ਦੇ ਵਿੱਚ, that's why both are approaching towards each other. Depends upon each other. How? ਜਿਹੜੀ moth है, here moth enters the flower to lay eggs. eggs lay ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ flower ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ moth. eggs ਕਿੱਥੇ lay ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ? in the ovary. ovary ਕਿੱਥੇ ਹੈ? female flower ਦੇ part ਦੇ ਵਿੱਚ. clear है? ਆਪਾਂ already ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ where the position of ovary lies. in the ovary of yucca flower. ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ egg lay ਕਰਨ ਜਾਏਗੀ moth. and deposit ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? pollen grains over the stigma of the same flower. same flower ਦੇ ਇਹਦੇ ਹੀ pollen grains ਉਹ carry ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. pollen grains of same flower. flower ਦੀ ovary ਨੂੰ approach ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? just to lay its own eggs over there, so that ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਲਾਰ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗ ਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ. ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕੀਤੇ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਨਾ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਫਲਾਰ. ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੌਥ, ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੀਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੀਡ ਡਿਵੈਲਪਸ ਐਂਡ ਲਾਰਵਾ ਆਫ ਮੌਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਰਵਾ ਹੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. हैच होके एग तो बाहर आ जाता है. हैचिंग होंदी ही ऑब्वियस जी गल है कि कमिंग आउटसाइड ऑफ द एग.
that is done now. This was also a short topic, nothing more. Our next one is one thing we left, just remember some plants name which are insect pollinated. Insect pollinated plants, some we have already done. One was yucca, second was fish, third was orchids, and the last one we did in the last lecture was salvia, and the other are ficus and mimosa. These are some insect pollinated plants where insects help in pollination. Now come to our next topic, that is anemophily. As the name suggests, anemo, it means wind pollination. The pollination is done with the help of wind. Just remember the examples where wind pollination or anemophily happens is maize, is wheat, coconut, sugarcane and cannabis, that is bhang. भांग दा जेड़ा पेड़ है, cannabis is bhang. Okay, you have to remember all the names or either few of them where anemophily happens. And what is anemophily? It's the pollination with the help of wind, where wind helps in pollination. As the name suggests, what do you think कि flower जो anemophily दे help नाल pollinate करते हैं, what kind of flowers they will be? They will be light in color. There is no need to attract the insects or attract anything. Only the abiotic agent, that is wind, will help in pollination. Here flower structure is obviously different, so there is no need to attract the insects. Flowers will be light in weight. Some of the features की होंगे of anemophily flowers. ਜਿਹੜੇ anemophily flowers है उन्हां दे features, one will be light weight होंगे वो, that's why अगर heavy weight होंगे ਤਾਂ ਉਹ wind ਦੇ ਨਾਲ move ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. pollen grains will be small pollen grains होंगे उन्हां दे, and most important they will be large in number, बहुत सारे होंगे. since ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ loss ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ pollen grains ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ obvious ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ all will not be able to reach their destiny or some of them will be get lost, ਉਹ loss ਹੋ ਜਾਣਗੇ. तो बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ਜਿਹੜੇ एनीमोफिली फ्लावर्स है वो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइडेड पोलन ग्रेन्स का साइज स्मॉल होएगा एंड जो कंप्लीट फ्लावर है उसका वेट लाइट होएगा. दैट्स वाई दे विल बी कैपेबल फॉर विंड पॉलिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड एनीमोफिली. क्लीयर है जी. पैटल्स ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, वन थिंग मोर, पैटल्स small and green only. petals small and green क्यों होंगे? ਕੀ लगता सानू अगर असी pollination ਦੇ point of view तो सोचिए ਤਾਂ why petals are attractive? ਅਸੀਂ starting ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि petals ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ attractive ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ colors ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. one of the reason is just to attract the insects for pollination. Here there is no external agent, that is insect is required, and that's why petals are only green and small in color size, since there is no need of to attract the insects. Then come to our next point. Just remember anemophily flowers are small,
कलरलैस, ऑडियोरलैस, कोई ऑडियोर नहीं होंगी सिंस उन्होंने किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं। नैक्टरलैस, नैक्टर क्यों चाहिए? इंसैक्ट नू चाहिए टू गैट फूड फ्रॉम दैट, टू गैट नरिशमेंट। तो इंसैक्ट ने अप्रोच ही नहीं करना उस फ्लावर नू, सो दैट्स क्लीयर कि उत्थे वो नैक्टरलैस भी होंगे। नैक्सट इज दे विल बी स्मॉल, ड्राई एंड लाइट वेट पोलन ग्रेन्स। लाइट वेट पोलन ग्रेन्स होंगे, लार्ज इन नंबर होंगे। ये आपां ऑलरेडी लिख लिया सी पॉइंट्स। अगेन वी आर रिपीटिंग दीज पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल है जो कैनाबिस है, कैनाबिस दैट इज़ जिन्हों असी भंग का पौधा भी कहने आ, इट प्रोड्यूसिस 5 लाख पोलन ग्रेन्स once a time। 5 lakh pollen grains, that is very much, that is approximate value actually, but just to imagine कि कैनाबिस जिहड़ा हैगा इतनी अमाउंट दे विच पोलन ग्रेन्स नू डेवलप करदा है, सो दैट सम ऑफ दैम जस्ट अपनी वो प्रॉपर डेस्टिनी दे पहुंच सकन। क्लीयर है? Next, quickly come to our next topic. Just we have to finish the chapter so that we can cover all the topics here. Next one is in anemophily flowers, stigma जड़ा है that is hairy, stigma hairy होएगा। Now let's थिंक अबाउट दैट कि स्टिग्मा हेयरी क्यों होएगा। देखो अगर विंड पॉलिनेशन होएगी तो स्टिग्मा शुड बी, अगर स्टिग्मा हेयरी होएगा एंड विंड पॉलिनेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ विंड, पोलन ग्रेन्स आर श्रेडिंग ओवर द अदर फ्लावर्स। तो अगर स्टिग्मा हेयरी है तो पोलन ग्रेन्स नू कैच करने के चांसिस इनक्रीज हो जाएंगे। ऑबवियस जी गल है, फ्लफी होएगा अगर स्टिग्मा हेयरी होएगा तो उहदे च जिहड़े वो स्टक होंदे पोलन ग्रेन्स दे स्टक होने के चांसिस इंक्रीज हो जाएंगे। दैट्स वाई बाय डिफॉल्ट बाय नेचर स्टिग्मा इन्हां फ्लावर्स का हेयरी हुंदा है। पोलन जिहड़े आ नॉन स्टिकी हुंदे हैं, पोलन आर नॉन स्टिकी। वाई नॉन स्टिकी? अगर देखो वो स्टिकी होणगे तो विंड की हैल्प नाल वो पॉलीनेट करनगे ही नहीं, मूव ही नहीं होणगे। तो दैट्स वाई पोलन आर नॉन स्टिकी। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स, अच्छा इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जोड़े यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं मीनस जिन्हां विच ईदर मेल फ्लावर इज़ प्रेजेंट और फीमेल फ्लावर इज़ प्रेजेंट, देयर मेल फ्लावर्स आर मोर। ज़्यादातर की हुंदा है मेल फ्लावर्स आर मोर, लार्ज इन नंबर एज कंपैरेटिव टू फीमेल फ्लावर। सिंस फीमेल फ्लावर ने तो वेट करनी है दैट पोलन ग्रेन शुड कम, तो मेजर रोल जिहड़ा हैगा मेल फ्लावर दा है, it has to produce the pollen grains. But in bisexual flowers, stamens are more. Stamens are large in number. Bisexual ਦੇ ਵਿੱਚ उल्टा ਹੁੰਦਾ है। अच्छा, calyx and corolla. Just go to our initial videos when we started this topic, this chapter, sorry, and we have very much clearly understand that what is calyx and what is corolla. Both terms we better know. Calyx and corolla reduced है or either absent है. The reason of that is also no need of to attract anyone. ठीक है? Now come to our next point, that is ornithophily, that is bird pollination. The next pollination is ornithophily, that is with the help of birds. Birds help करते हैं pollination दे लिए। Here in this case
ਹੁਣ ਬਰਡ ਨੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਦਰ ਉਹ ਐਨੀਮੋਫਿਲੀ ਹੈ, ਔਰਨੀਥੋਫਿਲੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਮ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਔਰਨੀਥੋਫਿਲੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ, दैट इज़ ऑफ फनल शेप, कोई सेंट नहीं है, कोई ओड्योर नहीं है, इट इज़ completely absent in ornithophily flowers। फ्लोरल पार्ट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ फ्लोरल पार्ट्स होंगे इधर करोला, कैलिक्स, petals, stamen, whatever you call, these are leathery। कलर ब्राइट होएगा ਇਹਨਾਂ ਦਾ, just reason we can understood right now कि color bright क्यों होएगा, they have to attract the birds। having nectar भी present है, since birds will only approach to that flower just to feed themselves, and there are some also edible parts of the flower there, edible parts भी हैं। both reason ਦੇ ਲਈ birds approach ਕਰਨਗੇ ਇਸ flower ਨੂੰ and ultimately खुद ਨੂੰ nourish ਕਰਨਗੇ ਹੀ, and ultimately क्या है, they will help in pollination too। and its examples are ornithophily ਦੀ examples हैं pollination ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। one is bottle brush, agave which is known as century plant, next is bombax, with some of the names you will be familiar very much and some of the names were very new to you। bombax which is also known as the red silk cotton, its common name is red silk cotton, clear, that is a ornithophily pollination। next one is crypterophily। next one is crypterophily pollination, kind of pollination, this is actually pollination done with the help of bats। ਉਹ ਵਾਲੀ pollination where bats are the biotic agents which help in pollination, and the term we use for that is chiropterophily। chiropterophily pollination which occurs with the help of bat, this is also known as bat pollination। here the specific features are the flowers ਜਿਹੜੇ ਹੈ dull in color, since we all know that bats are nocturnal, so there is no need of colors, तो ਜਿਹੜੇ flowers ਹੈ obvious है dull in color होंगे, large in size होंगे, abundant nectar, इन्हां च nectar बहुत ज़्यादा होएगा, that's why bats approaches to these flowers। nectar तो abundant है ही है, as well as pollen grains are also in large in number। odor बड़ी strong होंदी है, since bats are nocturnal they have to approach these flowers at night, so odor उन्हां दी ज़्यादा strong होएगी, that's why it will be easy for the bats to approach that flower। having more edible parts, ये ਜਿਹੜੇ plant है, ये ਜਿਹੜੇ flowers है, इन्हां दे बहुत सारे parts edible हैं which help for the bat to get nourishment from that edible parts। one of the example is Kigelia pinnate, that is a sausage tree, that is also known as sausage tree।
and the next one is Anthocephalus. I can understand कि ये ਜਿਹੜੇ words हैं these are quite tough for you in the first time, but as you recall these again and again, these will become very familiar to you. Next one is, quickly let's go to the next topic, which one is hydrophily. As the name suggests, now we all know that what is the meaning of hydro. Hydro means water. You are also doing in chemistry classes. This term is very much clear to you, that is water. The pollination which is done by the help of water. It is also known as water pollination and its scientific term is hydrophily. Pollination ਜਿਹੜੀ कि water ਦੀ help ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So here we can understand कि pollination water ਦੀ help ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ. That means there is no need to attract someone. कोई external biotic agent is not helping in this case. The water is abiotic agency. So ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ features हैं that are someone different from the biotic agencies. Here flowers will be small and colorless. Obvious है, the flowers ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ water 'ਚ ਹੋਣਗੇ, then their maximum flowers are colorless. There is no nectar. Nectar तो ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ birds ਨੂੰ ਹੈ, biotic agents ਨੂੰ ਹੈ, तो there is no nectar and odor. If the flower is in water, then what's the need of odor? Pollen grains are light in weight. Lightweight pollen होंगे. That's why they can float easily on above the surface of water or under the surface of water. Long and sticky stigma होएगा, so that it can easily catch the pollen grains. Stigma will be long and sticky. Just this structure will help the stigma to catch the pollen grain, to approach the pollen grain easily. One thing more, hydrophily is not a common kind of pollination. It's not very common. It's just happen only in some aquatic plants. Aquatic plants ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? Which grow in water. That's why they are called as aquatic plants. And example ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ this kind of hydrophily kind of pollination happens is Vallisneria, Hydrilla, in your offline classes your teacher will show you the slides of Vallisneria and Hydrilla plant. I am quite sure for that. These are the very common slides. Everyone used to show it in the lab. Now, in hydrophily pollination, this is of two types. One is hypohydrophily, one is hypohydrophily, and the other one is epihydrophily. Here pollination hypo means below the surface. Just to remember, pollination which is done below the surface of water, below water surface ਦੇ नीचे होएगी. But in other case, pollination on the water surface. In epihydrophily, on the water surface. ये water surface ਦੇ नीचे ही हो जाएगी pollination, but here pollination will above the water surface. An example of this is seagrass
and its example is Vallisneria. फिर जेडे पोलन ग्रेन्स हैं, इन दिस केस पोलन ग्रेन्स फ्लोट करते हैं, फ्लोट एंड मूव करते हैं टुवार्ड्स अंडर द वाटर सरफेस, अप्रोच करते हैं स्टिग्मा नू एंड get pollinated. Okay, now just move further. In Vallisneria, what happens in Vallisneria and what we are talking about? We are discussing about hydrophily kind of pollination. And what is hydrophily? Hydrophily is the pollination which is done with the help of water. And hydrophily is further of two types. One is epihydrophily and second one is hypohydrophily. Hypohydrophily above the below the water surface, and epihydrophily is above the water surface. Now come how pollination occurs in Vallisneria plant. What happens in Vallisneria? That is also known as tape grass. First of all, you just know it's a freshwater plant. Steady जड़ा water है उधे विच नहीं हुंदा. This always you will get it from the freshwater plant. है male plant. Its male plant जड़ा है, it produces abundant of large number of pollen grains. Obvious जी गल है कि मेल प्लांट है तो वो लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स ਨੂੰ प्रोड्यूस करेगा और ये राइज करते हैं, राइज अपवर्ड बट इन क्लोज्ड पोजिशन, क्लोज्ड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. अपवर्ड मूव करते हैं बट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ क्लोज ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Then comes on the water surface. Water surface ते आंदे हैं ਇਹਦੇ flowers and open हो जाते हैं. Under the water they are closed, but as soon as they come upon the or near the water surface they get open. This flower has two functional stamens. दो फंक्शनल स्टैमन्स होंगे हैं, टू टैपल्स होंगे हैं. नाउ व्हाट इज टैपल? वी डिड टू अर्ली कि टैपल्स एक टर्म असी इनिशियल स्टेज दे विच जदों असी चैप्टर स्टार्ट किया सी उदों करी सी कि व्हाट इज टैपल व्हेन सैपल्स एंड पैटल्स आर फ्यूज्ड. इन सम केसेस दे आर फ्यूज्ड एंड वी कैन not able to separate both the petals and sepals. Then a new term tepal is introduced. For that case tepal is used. ਜਿਹੜੇ two tepals हैं ये क्यों होंगे हैं? They form boat shape structure. Boat shape structure ये बनाते हैं. This is we are talking about the male plant. Male plant the main काम की है पहले वो abundant of male flowers ਨੂੰ produce करता है. Male flower ਜਦੋਂ तक under the water surface ਹੁੰਦਾ है that is closed in closed position, it rise upward ਨੂੰ move करता है, then comes on the water surface and get opened. Up to this stage it has two functional stamen, two tepals, and ਜਿਹੜੇ tepals हैं that form boat shaped structure. And what's the function of boat shaped structure we will discuss further. Now come to the female flower, female plant of Vallisneria. Female flowers female plant ਦੇ ਵਿੱਚ it produces, female plant produces single female flower. जिस तरह मेल फ्लावर ਤਾਂ लार्ज नंबर च प्रोड्यूस किए मेल प्लांट ने, बट फीमेल प्लांट ਜਿਹੜਾ ਉਹ सिंगल फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. हैविंग
लॉन्ग पैडिसल, ਉਹਦਾ ਪੈਡੀਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ट्रिफिड होएगा। Now male flower are drawn in depression of female flower। ਜਿਹੜਾ मेल flower है, फीमेल flower डाउन है, ये अपवर्ड राइज किया। ਜਿਹੜਾ मेल flower है, this male flower, these go in the depression of female flower। फीमेल फ्लावर के अंदर एंटर कर जाएगा। जिहड़ा इहदा एंथर है, इट्स एंथर विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रिफिड स्टिग्मा। स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट च आएगा उहदा एंथर। मेल फ्लावर को उहदा एंथर जिहड़ा उहदा मेल पार्ट है वो प्रेजेंट होएगा एंड एंथर के उपर ही पोलन ग्रेन्स अटैच होंगे। तो इट्स एंथर विल गेट अप्रोच टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। स्टिग्मा नूं अप्रोच किया, पोलन ग्रेन्स श्रेड करते स्टिग्मा के उपर एंड पॉलीनेशन गेट हैपन्ड। और आफ्टर दैट पॉलीनेशन डन एंड फ्लावर अगेन क्लोज हो जाएगा, close। Okay, now these were some examples of cross pollination। We have completed the topic cross pollination। Now we have already done the self pollination and now we have completed the cross pollination। There are some advantages and disadvantages of cross pollination, as there were, we already discussed the advantages and disadvantages of self pollination too। So now let's discuss about the advantages and disadvantages of cross pollination too। Quickly discuss first of all advantages of cross pollination। cross pollination ਦੀਆਂ advantages ਕੀ हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਊ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਔਰ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मूव कर रही है, तो कोई न्यू ਜਿਹੜੇ जीन्स है, कुछ भी ਅਸੀਂ रिक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो अपनी मर्जी ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ नहीं कर सकते। सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। हेयर न्यू करैक्टर्स, सिंस वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ਨੂੰ अप्रोच कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर दे हैं, एक प्लांट दे हैं और वो अदर प्लांट के फ्लावर ਨੂੰ अप्रोच कर रहे हैं, तो सब के करैक्टर्स डिफरेंट होंगे। तो सो न्यू करैक्टर की मिक्सिंग जी है वो डेफिनेटली होएगी। न्यू करैक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलीनेशन इज़ दैट ऑफ स्प्रिंग्स जड़े हैं, जड़े इन्हां दे सीड्स डिवेलप होंगे, दैट विल बी हैल्दी। अडेप्टेबिलिटी ਜਿਹੜੇ ऑफ स्प्रिंग्स हैं उन्हां दी वो भी ज़्यादा होएगी, ऑबवियस जी गल है। सिंस उन्हां दे विच न्यू ट्रेट्स मिक्स होए हैं तो हैल्दी ਜਿਹੜੇ ट्रेट्स होणगे वो एनवायरनमेंट ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜਿੰਗ एनवायरनमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। न्यू एंड बेटर वैरायटीज़, बेटर एंड न्यू वैरायटीज़ वो भी जनरेट होणगियां। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਕੰਪੈरेटिव ਟੂ ਅਦਰ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Our next point is also about the yield। ਉਹਨਾਂ ਦੀ yield more ਹੋਏਗੀ, more than average yield। organism adaptability 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, better fitted to environment। better fitted ਜਿਹੜਾ plant ਹੈ to the environment, जल्दी मरेगा नहीं, जल्दी वो अनहेल्दी नहीं होएगा,
जल्दी जल्दी डिजीज़ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸਮ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। However, these are very much less as compared to self pollination, but कहते हैं ना कि जहाँ पे अच्छाई है वहीं पे बुराई भी है, कोई भी 100% नहीं होता। सिमिलरली जी क्रॉस पॉलीनेशन है इदियां भी कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर ने, एंड द वन इज disadvantages of cross pollination. First one is not always happen. देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक्सटर्नल एजेंट्स ਤੇ ही डिपेंड कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि हवा चले और इतनी तेज़ी नाल चले कि पोलन ग्रेन्स ਨੂੰ उड़ा के नाल ले जाए, एंड मोर ओवर पोलन ग्रेन्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋਏ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ, लॉस बहुत है। विच काइंड ऑफ लॉस? पोलन ग्रेन्स जो अबंडेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल फ्लावर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उन्ने पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे, सम ऑफ देम गेट लॉस्टेड। तो लॉस है, लैस इकनॉमिकल है, इहदे च ही आ जांदा वो, इट्स लैस इकनॉमिकल। वेरी गुड करैक्टर्स, समटाइम्स क्या होंदा है कि जो बहुत अच्छे करैक्टर्स वाले जो सानू रिक्वायर्ड है वो लॉस हो जाते हैं। समटाइम्स सिमिलरली इहदे नाल ही सम अनवांटेड अननीडेड ट्रेड्स आ जाते हैं, सानू चाहिए नहीं होंगे ਉਹ वाले पोलन ग्रेन्स एंड ਉਹ वाले फीमेल फ्लावर ਉਹ वाले स्टिग्मा ਨੂੰ अप्रोच कर जाते हैं कि जो साडे ਲਈ उस तो भी रादर लो पुअर क्वालिटी दे सीड ਨੂੰ जनरेट करते हैं। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ लॉस ही है। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर वेस्टेड, पोलन ग्रेन्स ਦਾ लॉस ਅਸੀਂ ऑलरेडी ਗੱਲ कर लिए। Clear? These are some of the disadvantages of cross pollination, but comparative to the disadvantages there are more advantages of cross pollination. High yield plants are produced with this method with the help of cross pollination. Now let's quickly come to our next topic, which is the difference between self pollination and cross pollination, which I don't think कि बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि असी बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों टॉपिक्स ਨੂੰ कर लिया, so you can easily differentiate both of them. What is the difference between self pollination and cross pollination? For major differences: transfer to the same flower, transfer to the same flower. Here is the transfer to the different flower. Transfer of whom? किस चीज़ की ट्रांसफर की गल कर रहे हैं असी? पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर। ऑब्वियस है, पोलन ग्रेन्स हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्टिग्मा, that is the female part. Transfer to the different flower. Second is can't produce new variety. ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਊ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੇਅਰ ਫॉर्म ਨਿਊ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਰ ਫॉर्म्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म च लिख दिंदी हाँ सिंस वी हैव वेरी मच लेस टाइम। Here flowers are hermaphrodite. Hermaphrodite means both male and female flower are in the same part. Hermaphrodite flowers हैं, male and female parts both are in the same flower. Here uni or bisexual, both kind of flowers you can see.
सेम टाइम ते एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, मैच्योर पैरेलली, सेम टाइम ते वो मैच्योर करते हैं एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम ते मैच्योर करते हैं बोथ। फ्लावर्स जड़े हैं ओपन और क्लोज होंगे, ओपन और क्लोज्ड। हेयर ऑलवेज ओपन होंगे, फ्लावर्स जड़े हैं क्रॉस पॉलिनेशन वाले ऑलवेज ओपन। अडेप्टिबिलिटी लेस होएगी, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड adaptability less. Here more adaptable to the surrounding, no wastage, it is the advantage of self pollination, no wastage. Here large wastage, wastage बहुत होनी है। immunity less होएगी, less immunity of the plants, since new characters introduce ही नहीं होए, these will be more immune, इन्हां दी immunity ज़्यादा होएगी, obvious है। yield less होएगी, less immunity and less yield। देखो अगर तुसी थोड़ा जिहा पिछे मूव करो तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सैल्फ पॉलीनेशन दे एक साइड ते आ गए एंड बोथ सेम इधर क्रॉस पॉलीनेशन दे विच आ गए। हेयर मोर यील्ड, यील्ड ज़्यादा होएगी। क्लियर? हेयर till now our pollination topic is over. Our next topic is outbreeding devices according to your textbook, which we will discuss in our next class. Till then I hope ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਵਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।